Assalamu alaikum, Hamza bhai. What's your controversial call? My controversial opinion is that self help is screwed up. And I say that after being in the training industry for a long time and looking at how ये जो सेल्फ हेल्प के ऊपर जो लिटरेचर, जो फ्रेमवर्क्स, जो तरीके हैं जिससे एक बंदे को सिखाया जाता है कि यार तुम अगर अपने आप पर यकीन कर लो तो तुम ये कर जाओगे, वो कर जाओगे, और सिर्फ अपने दिमाग में अपने बिलीफ्स बदल लो एंड टेल योरसेल्फ दैट यू कैन डू इट, एवरीथिंग इज पॉसिबल. That is not only in conflict with reality, that is also based on a very false belief of who human beings are, and it gives a deluded sense to human beings कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ. मेरा इसके तहत जो जो सब ओपिनियन है, सब पॉइंट ऑफ ये है कि स्पेशली एज अ बिलीवर दिस इज नॉट इन टच विद योर फिलोसफी ऑफ लाइफ. जो एक बिलीवर होता है, जो एक क्रिएटर पे यकीन रखता होता है, उसकी जो बुनियाद के अंदर जो फिलॉसफी होती है वो ये नहीं होती कि इंसान सब कुछ कर सकता है. उसकी फिलॉसफी होती है कि खुदा सब कुछ कर सकता है. तो वो पहले रिलायंस अपने अंदर पैदा करता है ऑन द ऑल पावरिंग एंड ऑल सुप्रीम एंटिटी ऑफ द यूनिवर्स, और फिर वो उससे अपना कॉन्फिडेंस ड्राइव करता है. जो मॉडर्न सेल्फ हेल्प है ये एक वेस्टर्न सेक्युलर कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ से निकली है जिसकी पूरी तारीफ है. And when we, as people of faith, consume those concepts and we use them and introduce them in our trainings and in our motivational seminars, we forget that this entire self-help industry is coming from an essentially atheistic and secular mindset, which has a centuries-old tradition in the Western society. So, I am possible, मैं सब कुछ कर सकता हूँ. भाई आप सब कुछ नहीं कर सकते. सब कुछ करने वाला ऊपर बैठा हुआ. आप पहले अपने अंदर एक डिफरेंट माइंडसेट पैदा करें, रिलायंस पैदा करें, वो सब कुछ कर सकता है, और फिर सोचें कि मुझे क्या करना. So that's a short summary of what I feel about this thing. I've got two things with this. A while back, मैंने भी I wrote a piece on this, and उसमें मैंने यही कहा था कि I don't, for example, my view was I just don't believe in self help books. सही है. I mean कि आप जितनी भी self help books पढ़ लें, I find a lot of self help in fiction. So Yeah, I read a lot of fictional books and I find self help in that because so I thought कि when you're open to help, you'll find it from anywhere. You don't know. yeah, You have to open to be. तो भले आप भले open ना हो learning के और आप self help की book पढ़ो, you never learn. And also secondly, I think it becomes self help is an oxymoron in itself because help हर वक्त it's an outside source. आप बाहर से मांगते हैं. yeah, yeah. That's very interesting actually, and that's the problem right there. It's a very selfish and individualistic, me-centered philosophy of life, जिसमें इंसान सिर्फ अपने ऊपर भरोसा करता है, जो कि एसेंशियली गलत है. और दूसरी चीज इसके अंदर ये जो फॉल्स पॉजिटिविटी आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जिसको आज खुद वेस्टर्न दुनिया में भी क्रिटिक किया जा रहा है टॉक्सिक पॉजिटिविटी के नाम पे, वो भी यहीं से निकली है. इंसान को सिखाया जाता है, डिलूट किया जाता है. तो आई बीन थ्रू अ लॉट ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस वेयर आई हैव टच्ड सम ऑफ द इन द यूएस एज वेल सम ऑफ द एपिटमी ऑफ दीज सेल्फ हेल्प सेमिनार्स, एंड दे ऑल सेंटर अराउंड दिस फॉल्स पॉजिटिविटी. तो अगर आप पुरानी लिटरेचर में देखें तो उसमें देयर इज अ हम्बल एंड ग्राउंडेड व्यू ऑफ लाइफ. जिंदगी में गम है, तकालीफ है, इंसान उससे गुजर के जाता है. ये नहीं है कि मैं आज 35 साल का और मैं कहूँ 45 में बस मुझे जैक वेल्च बनना है. तो ये भी थोड़ा सा एक आउट ऑफ टच विद रियलिटी है, जिससे लोग इन टर्न डिप्रेशन और एंजाइटी में भी जा रहे हैं, जिसको आप हसल कल्चर कहते हैं. So all of that I feel is an outpouring of this. I think awesome. That's a good take. That's a good take to have.